Yes, Rishita and Harsha, am I audible? Yes, sir. I'm going to give you a few reactions. I hope you guys have revised yesterday's class. Okay. See, in organic chemistry, now, there is no other way of learning other organic chemistry except doing the reactions again and again and again and again. Okay. With various reactants and various reagents. So yesterday we learned a very important reaction, that is uh, elimination reaction. And then we studied small portion from the reaction with metals. So all the questions that I'm going to give here is going to be from elimination reaction itself. Okay. Chali, I'm going to give you some questions. आपको please उसका answer लिखिए. Write the question. Write all possible products and label major या minor. Okay, you have to draw all the possible products and you have to label it major or minor. Number one. Even if this heat element is not present, then also you have to write the elimination reaction. If you have alcoholic KH is something that you have to remember. ज़्यादा सवाल नहीं देंगे, 5-6 सवाल ज़्यादा नहीं. Instead of Br, there can be chlorine, it can be iodine also. Fluorine generally does not show. तो फ्लोरीन वाले एग्जाम्पल आपको आएंगे भी नहीं, ठीक है ना. बट ऐसा नहीं कि फ्लोरीन रहेगा तो आप उसमें कीजिएगा. एटलीस्ट एट द बोर्ड लेवल्स यू विल राइट द प्रोडक्ट्स इवन इफ देयर इज फ्लोरीन, बट जनरली फ्लोरीन वो देंगे नहीं आप. Three milligram, no? 3, 4, my bad. Once you're done, send the answers on my WhatsApp.
Yes, what happened? Rishita and Harsha, बहुत time लग रहा है? Percent. Harsha, can you please do with alpha hydrogens for me? You should write alpha hydrogen and everything. Rishita, what happened? One second, sir. I'm sending. बहुत हड़बड़ में कर रहे हैं आप, हर्षा. Rishita, how much more time? 1 minute भी हो गया. Guys, if you are not going to revise previous class, कल ही क्लास में कराया था बहुत सारी चीजें है ना, कुछ भी उससे अलग नहीं दिया है हमने. You have to use the same method. If you are going to only like, you should follow a methodology ना, जो methodology हमने बताया हुआ है. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. This is our alpha carbon and these are our beta carbons. Okay, just wait a second. Let me check Shita's and then I will discuss this. ठीक है, till 3. The, Third वाला the fourth जी ऋषि. one, the fourth one doesn't have it doesn't have any products, right? Because it already Yeah, has correct. 4 hydrogen bonds. No, 4 carbon atoms. There is no hydrogen ना. हाँ ठीक है, सही है. I understood you. So all of these three are going to have, all of these three is going to have 3 hydrogens. So all of these are equivalent, and I can say that I will have product something like this. Okay, you just need to make a. I mean, if you have drawn it like this, also then it's also fine. I saw Harsha's, like you have made and like this. This is also fine, but better way is that there will be 3 bonds. You know that because you are going to remove, so it will be like this first, and then a double bond. Okay. Anyhow, the product is correct. Here, if you see here, then Harsha, ye dekhiye, this is your alpha carbon, and these are the beta carbons. My bad. These are the beta carbons, right? This is beta 1, this is beta 2. Beta 2 has 0 hydrogens. आपने वहां पे 1 hydrogen लिखा है. That's not right. There are 4 carbon atoms. 4 तो bond है इसमें. So here we are going to have only one product that is going to be something like this. So everything will be like this, and you will have a double bond here. ठीक है, you'll have a double bond here. Now in this case,
this particular carbon atom, it does not have any hydrogen. Okay. Again, so I will tell you how. This is your alpha carbon. These are your beta carbons. This is one beta, this is another beta. Now the number of hydrogen in the beta carbon are going to be, if I am going to remove this circle here, then the structure we can have is like this. You can see that this blue atom is having 1, 2, 3, and 4 bonds. So there will be 0 hydrogen here. There will be 3 hydrogens here. So anyhow, we have to make the alkene. So in order to make the alkene, you need to have hydrogen and the beta carbon. Now this will have no product. Okay? नो प्रोडक्ट वाला तो आपने देख लिया, लेकिन वर्षा ने तो नो प्रोडक्ट देखा था ना, नो रिएक्शन, ठीक है, बट उससे पहले वाला आपने गलती कर लिया था, ठीक है। आई हैव नॉट मेड ऑल द प्रोडक्ट्स, आप लोग को सारे प्रोडक्ट वैसे बनाए थे, आई जस्ट मेड द मेजर वंस, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे भी, हाँ, ऑल ऑफ दीज विल बी हैविंग ओनली सिंगल प्रोडक्ट्स, 2, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का हम नहीं करा रहे रिएक्शन, आई होप आप लोग, वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं पढ़ के तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यू हैव टू रीडू द क्वेश्चंस वंस अगेन। Once you are done with the class, take your notebook, hide the products, write the reactants, and then try to do the products. Harsha, do you practice like this? Tell me. No, not yet. Rishita, what about you? Do you practice like this by writing it down? No, sir, I just look through it. No, 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 no. No looking through it, bhai. No looking through it, okay? Have a rough notebook. ठीक है, या तो आप ये कीजिए, देखिए what like in 12th standard my organic chemistry was strong only because of one thing. It was that I used to attend was same class twice. Okay. So see, yeah, I was not a very studious person who used to like go back and do a lot of homeworks and those things. I always needed a teacher. So what I used to do was I asked my teachers, can I sit in 2 classes? Like one was in the morning, and I was having some vacation at that time. So in the morning and then again in the afternoon or in the evening. So I said only one seat, because again, if you are in a coaching center which is offline, there is a restriction that there will be some seats which are not going to be vacant, right? This is a one seat. So he found out, and then I attended all the classes. A complete organic chemistry, I did it twice with the teacher. Okay, so only doing that, I did not do anything else. Okay, but only doing that, doing the class twice a time. So you have to do the same thing. Right? But you need to do the reactions at least once more, at least once more. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। रिएक्शन विद सोडियम, नाउ देयर इज नो अदर वे, रिशिता एंड हर्षा, ठीक है, देयर इज नो अदर वे। स्टार्टिंग से ही आप अगर प्रैक्टिस करने लगेंगे, देन यू विल फाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मच इजियर, एंड यू विल फाइंड, यू नो व्हाट, इफ यू आर गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस, है ना, इन एवरी क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस एंड यू विल सी हाउ इजी इट इज गोइंग टू, ठीक है। सो यू विल सी द डिफरेंस इन अ सिंगल डे, एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट वंस, ठीक है। Before the class, you just revise whatever you have done. I will give you questions. You will be doing the reaction. You will be writing the props very easily, and that will motivate you to learn again. That will motivate you to learn again. तो सिर्फ एक बार आपको वो थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा, आप लिख के अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गए, जैसे कि आज मेरा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। Come to the next class like you are going to be tested on the material that has been asked before. फिर उसके बाद जो आपको मजा आएगा, लाइक क्लास में सारे सवाल बनने लगे, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। We have seen one reaction with metal, that was with magnesium to get Grignard reagent, and we also saw a question. Now we have the second reaction. इसको थोड़ा हम change कर लेते हैं थोड़ा, kind of a topic, and we are going to look at second. We are going to look at second reaction with metal, which is a reaction with sodium. Reaction with sodium. Okay, now in reaction with sodium, there are 3 reactions that you have to learn. All of these are main reactions and important. Woods reaction. Next is Fittig reaction. And C is Woods-Fittig reaction. Woods-Fittig reaction. You write the A part. Woods reaction.
Now in Wood's reaction, this is shown by haloalkene. Okay? Two same haloalkene react with sodium in the presence of dry ether, and they form alkene which has double the number of carbon atoms. Now please listen very carefully. I'm writing some generic reactions. उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? First of all, लिख लीजिए, लिख लीजिए. When two same haloalkene, this is important that it is going to be haloalkene, reacts with sodium. So again, if you are having sodium, then the solvent must not have water. That is why in the presence of dry ether, we should have anhydrous conditions. Dry ether, they form alkane with double the number of carbon atoms. The generic reaction can be written as any haloalkene plus sodium will give you this R, and R will join together. Okay? Plus you will have NaX. In order to balance, see, I have two halogens here, so I will write 2 here, and there will be 2 sodium that is going to be used, right? Basically, आप इसको क्या कीजिए? This whole thing is gone with NaX and X, and you get RR. Okay? For example, now examples are going to be a lot. ध्यान रखिएगा, ये आपके number 1, your number 2, number 3. CH3Br plus sodium in the presence of dry ether. ठीक है? अब देखिए CH3Br I am not writing twice. I just scroll up. ठीक है, इसको चलिए यहाँ तक लिखिए, टू सेकंड रिएक्शन तक लिखिए. अच्छा, थर्ड तक लिख लीजिए. Just let me say one thing. CH3Br plus sodium gives you in the presence of dry ether. So please understand, I'm not writing 2 because in organic chemical reaction, we don't bother with the stoichiometry much. We just need to look at the product. Product is more important. You will have CH3 bonded with CH3. Okay? Plus you will have NaBr. Again, NaBr is also not very important. CH3 is much more important. Let me know once you're done with the third example. Done. Not done. Yes, Done ना? ठीक है, ध्यान से देखो. ठीक हो गया ना? Example number 4. Let's suppose you have CH3, CH2, Cl plus sodium in the presence of dry ether. You will have what? This chlorine will be removed. ठीक है? और CH2 और CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट? CH3, देखिए 2-3 तरीके हैं इसको बनाने के, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, डोंट राइट नाउ. ध्यान सुनिएगा जरा. आप ऐसे कीजिए, CH3, CH2, ठीक है? Just below this, write the same element, but make sure, what you have to make sure, this alpha carbon and alpha carbon should be pointing to each other. किसी भी तरीके से. या तो आप ऐसे लिख दीजिए CH2, CH3, then also these alpha carbons are pointing. A better, or what I can say is more intuitive way is like this: CH3, CH2.
CH2 एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। तो हाउ मेनी कार्बन यू हैव गॉट? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। दिस इज व्हाट दिस ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। So if you are given something like this, for example, if you have 1 2 3 carbon atoms and then you have Br, ठीक है, sodium in the presence of dry ether, then in this case ध्यान से सुनिएगा, देखिए देखिए देखिए, 1 2 3, you don't have to write the halogen atom. Once again 1 2 3, अब इन दोनों के, दिस इज द अल्फा कार्बन ना, इनको आप ज्वाइन कर, ठीक है। ना चूज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 3 4, ठीक है। तो मेक 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे मिथाइल, थर्ड कार्बन पे मिथाइल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टेल मी गाइस, रिशिता, हर्षा, हाउ टू मेक both of Yes, these sir. are same structure, ठीक, both of these are same structure। Harsha, what about you? Are you getting this? Yes or no, please tell me। Yes, sir. ठीक है, चलिए, आई एम गिविंग अ फ्यू वेरी सिंपल एग्जांपल, उसके बाद थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक है। दो हो गया, चलिए तीन का एक बार ऐसे कर लीजिए। बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनाइएगा। 1 2 3 4 Cl सोडियम ड्राई ईथर। फोर्थ तक कर लिया था आप लोगों ने? 5 आयोडीन Yes. सोडियम ड्राई ईथर। चलिए ठीक है, इतना बनाइए। उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे धीरे धीरे। बाय द वे, कल टेस्ट दिया था आप लोगों ने, तो कैसा सब हुआ था आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 2 वाज रॉन्ग फॉर हर्षा। ऋषिता का सब सही था। तो क्या रॉन्ग कर दिया आपने? CH3 CH2 CH2 CH3 ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक। ये एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था क्या? Sir, there's no highlighting. कोई हाईलाइट नहीं है इसमें। Just give me a second। लास्ट ईयर भी एक सेम सवाल चला था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। आपने कौन सा ऑप्शन किया? अच्छा, आपने डी किया होगा फिर, है ना? चलिए, जल्दी भेजिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा रहे हैं आप लोग। काउंट इसमें तो कुछ नहीं करना ना, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 कार्बन एटम, प्रोडक्ट में क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कर लीजिए जल्दी। वो तो हमने एक तरीका बताया था, दैट वाज फॉर कॉम्प्लेक्स वंस, ठीक है। यहाँ पे जल्दी कीजिए, लेकिन यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे? रिशिता एंड हर्षा, टेल मी हाउ मेनी इन द प्रोडक्ट। स्ट्रेट चेन बनेगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कितने कार्बन है रिएक्टेंट में? 5, 5। तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? 10, And हाँ, कार्ब एल्केन होगा जिसमें 10 कार्बन। जल्दी बनाइए, एक एल्केन बनेगा। एल्केन, ओके, नथिंग एल्स। आयोडीन मतलब आगे रख दीजिएगा, आयोडीन हटाइएगा। sir, do we need to send it? सॉरी, Do we need to send it? नो, आई मीन भेज दीजिए, भेज दीजिए, हमको तसल्ली हो जाएगी। इवन दो इट विल नॉट बी इनकरेक्ट, बट आई विल बी सैटिस्फाइड इफ यू सेंड इट नाउ।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऋषिता, ये भी आपको ना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एक तो सोचिए कितना आसान कर दिया हमने कहा, आपको स्कूल में जब सिखाया जाएगा ना, आई डोंट नो बट मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में दे डू इट लाइक दिस, CH3 CH2 Br, फिर आप करते रहिए यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। You should be also very comfortable with bond line structures. Bond line structures are going to save your time a lot. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा ना आप लोग हम सजेशन बताते हैं, जैसे लाइक 6 कार्बन में ना आप लोग को ये लगता होगा ना कि आप लोग ऐसे करते होंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ऋषिता एंड हर्षा, Yes, sir. Yes, sir. यू कैन बी अ बिट क्विक। एक दो चीज हम बता देते हैं एटलीस्ट फॉर स्ट्रेट चेन्स। इफ यू हैव इवन नंबर ना तो ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। काउंट इस तरह से कीजिए आप, मतलब लाइक 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट मेक सेंस और नॉट, आई मीन आपका ना इस तरह से रहेगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस ये तो फिर ज्वाइन करने तो बॉन्ड बन रहा है सर, है ना, कार्बन कुछ यहाँ पे नया नहीं। आई डोंट नो वेदर इट मेक सेंस। और व्हेन इट इज ऑड देन यू विल हैव कंप्लीट हिल। ये हिल है ना, बात समझ में आ रही है? दिस इज वन हिल। हिल जानते हैं, हिल ऐसे बनाते होंगे ना आप लोग, यहाँ पे Yes. सूरज, Yes. है ना, तो हिल। सो व्हेन यू हैव ऑड नंबर कार्बन तो कंप्लीट हिल्स। फॉर एग्जांपल कंप्लीट कितना हिल होगा, तो उसका क्या बोलते हैं, 1 माइनस करके हाफ कर दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड आपको कैलकुलेशन लगेगा, बट फॉर एग्जांपल 5, तो 5 में से 1 घटा के हाफ कर दीजिए, कितना हो गया 2, ठीक है। 2 हिल बनेंगे, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह हर्षा, Yes. ठीक है। चलिए हियर 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 6 8 10, ठीक है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा अलग सवाल, है ना। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? 8 9 1 2 3 4 एंड देन यू हैव आयोडीन हियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। दिस इज माय अल्फा कार्बन, आई विल मेक ओनली दी व्हाट, आई विल मेक ओनली दी अल्काइल पार्ट। 1 2 3 4 बना दिया हमने, 1 2 3 4 बना दिया हमने, देन दीज आर दी अल्फा कार्बन्स, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड आई विल चूज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। स्टिल हियर द आंसर इज करेक्ट बट इट डज नॉट लुक गुड। 5 6, so we have a carbon chain of 6, so this will be 2 3 4 5 6, and 1 2 3 में you have one methyl group, है ना, 1 2 3 4 5 6, and in fourth carbon we have a methyl group। देखिए 3 कार्बन में मिथाइल था, 3 कार्बन में मिथाइल लगा दिया, फोर्थ कार्बन मिथाइल, तो 4 कार्बन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, will ठीक it है, be देखिए correct if we leave it at the first step? यहाँ तक Yeah. हाँ, it will be correct in the board examination for half yearly examination unit test, please ask your teacher, ठीक है। ठीक है हर्षा, Yes. for example if you have something like this Cl NADE, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। अब ये कार्बन, अब या यही कार्बन एक ही चीज है ना, तो ऐसे बना दीजिए, दिस इज अल्फा। और ये समझिए कि हमने वी हैव जस्ट फ्लिप द मॉलिक्यूल एंड दिस इज माय अल्फा नाउ, यू नीड टू जॉइन दिस। बात समझ में आ रही? 1 2 3 4 5 and we have Br here in the presence of sodium and dry ether। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, and then you have a bond here. This is my alpha carbons, right? Now you need to calculate number of maximum number of carbon atoms. So 1 2 3 4 5 6. If you go that side also it will be 5 6. If you go this side it will be less. Okay, so you have 6 carbon atoms. 1 2 3 4 5 6, and I will number it here. So it will be 1 2 3 4 5 and 6. In the third carbon atom I have a ethyl group. Third carbon में 2 कार्बन लगा दिया अपनी, फोर्थ कार्बन में भी 2 कार्बन लगाना, ऐसा you will make a molecule। Please copy this down
Let me know once you're done. Where is your NCE or Harsha and Done. Rishita done. What about Yes, Rishita? Done. ठीक है, चलिए अब एक सवाल दे रहे हैं, अभी सवाल नहीं लिखना आपको, ठीक है. This is there in your textbook 10.21, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10.21 कर लीजिएगा आप in your notebook, and then we will do this question. Please listen, don't write anything, leave your pen aside. It is saying there is a primary alkyl halide C4H9Br, ठीक है. What we have? C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B, ठीक है. C4H9Br, this is your compound A, ठीक है. It reacted with alcoholic KOH to give compound B. B दिया इसने, ठीक है. So this will be an alkene, right? Alkene मतलब एक हम ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं. द नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी सेम. एक हाइड्रोजन निकलेगा, राइट. सो इट विल बी C4H8 और Br तो नहीं रहेगा. समझ में आ रही है? दिस इज माय B. मेक सेंस? सुनो, अरे बोलो भाई. yes, sir. ठीक है. दिस इज योर एल्कीन. ये आपके पास हैलो एल्केन है. लिखना कुछ नहीं है अभी, ध्यान सुनिए सिर्फ. हैलो एल्केन, दिस इज योर एल्कीन. देन वी आर रिएक्टिंग दिस विद HBr. वी आर रिएक्टिंग दिस विद HBr. HBr क्या करता है? एल्कीन प्लस HBr. एल्कीन प्लस HBr, बताओ what does it do? Alkene. Alkene plus HBr. है? What Hello, does it? Haloalkene. It makes a haloalkane, है ना? Via what? Markovnikov या anti Markovnikov? Marco. HBr है सिर्फ तो Markovnikov. Very good. ठीक है, तो we'll get what again? C4H9 hydrohalogenation. हाइड्रोजन भी जाएगा, हैलोजन भी जाएगा. Harsha, you remember this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. We have got this as C. Let us suppose we'll get a haloalkane with via Markovnikov addition. और क्या बोल रहा है? ठीक है. दिस इज एन आइसोमर ऑफ A. दैट इज ऑब्वियस बिकॉज इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. I mean, but these are not same compound. They are saying that A and C are different compound. ठीक है. Then they are saying when A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18. ठीक है. So when we have C4H9Br reacted with sodium, it gives C8H18. This is B. Then it is saying which is different from the compound. ध्यान सुनिएगा, which is different from the compound when N-butyl bromide is reacted with sodium. It is different by the compound when N-butyl. N-butyl क्या होता है? Normal butyl, if you guys remember. याद है N-butyl, isobutyl? बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. है ना? When N-butyl reacts with sodium, it will give you what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. So it is saying D is not this. पासेज में आ रही है? Yes, sir. है ना? बाय द वे एक सेकंड. एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लाइक दिस, है ना? अच्छा, इसका ये मतलब होगा, इट मींस दिस A is not N-butyl bromide. If A was N-butyl bromide, it would have given the same product as N-butyl bromide is giving when reacted with sodium. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. क्या ख्याल है? Yes or Yes, no? sir. Yes. ठीक है. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound form when N-butyl bromide is reacted. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है ना? अब देखिए. Now what are our, हमारा हमको क्या क्या बोला हुआ? अच्छा, by the way, this A is also ना primary alkyl halide 1 degree. ठीक है, it is what 1 degree. So ऐसा, this is not the, ये हो ही नहीं सकता है. Make sense?
क्यों नहीं हो सकता C4H9? बिकॉज इट इज नॉट प्राइमरी ना, ये सेकेंडरी हो गया। ध्यान सुनिए, कहीं आप लोग भटक ना जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज C4H9 it is 1 degree, ठीक है। C4H9 is C4H9Br. C4H9Br, it is what? 1 degree alkyl halide. That means the only possible structure are 1 2 3 4 and फिर Br, but ये भी नहीं है because we have seen why. Now what is C4H9Br? It can be, ये क्या हो सकता है? It will be like this, isobutyl. Here also we have 4 carbon atoms, 1 2 3 4, and if you look at the formula, it is going to be C4H9 C4 हाँ C4H9Br, ठीक है। So this is my A. So we can't shift bromine. Like this. Yes, sir. This is what, 1 degree or 2 degree? 2 degree. This 2 degree, na? Yeah. Got it now? And they are saying that it is what? Primary alkyl. है ना? Okay. ठीक है. So that is why the only possible structure is what we are going to have, just this. अब यहाँ पे देखिए, until unless आप लोग को आइसोमर हमने पढ़ाया होता, लाइक अगेन आइसोमर में हमने तो प्रैक्टिस नहीं कराया, और उसी चीज का नतीजा देख रहे हैं, उतने अच्छे से आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है ये। Did we do any isomers? Isomers. हाँ किया है ना, देखो 4 कार्बन के लिए, है ना, देख रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, इसमें हमने उतना प्रैक्टिस नहीं कराया। अब लाइक यू कैन सी व्हाई दिस इज नॉट स्ट्राइकिंग वेरी इजीली राइट नाउ। C4H9 का ये स्ट्रक्चर हो सकता था, ठीक है। तो दैट इज वाई, बट रिएक्शन पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज वाई आई एम प्रैक्टिसिंग इन रिएक्शन। अब ये जो एक एक सवाल है इस तरह के, अब यही सवाल आएगा, अगर आएगा ना तो आपको यही सवाल आएगा, ठीक है, इसके अलावा सवाल नहीं आता, ठीक है। सो व्हाट वी आर देयर सीइंग, आइडेंटिफाई, गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ A एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन। तो कर लेते हैं इसको। सो A इज, बाय द वे, इन CBSE also they are, if they are asking ना, सवाल क्या है समझिए जरा, सवाल है give the structural formula of A, so you have, that is going to have marks. All of these things, even if you don't show na, even if you don't show these things, they are not going to cut any marks. What you need to show is what is the structural formula of A, no matter how you have come to that particular structure, and then you have to write all the equation. This is going to contain marks, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर हम, हाउ विल आई शो दैट आई अराइव, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू शो योर लॉजिकल अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आई सेड नो नीड ऑफ शोइंग इट. If you're confirmed that okay fine, this is the structure, you write A is this structure and then write all the reactions, ठीक है। हम इसको एक बार पूरा कंप्लीट कर देते हैं आंसर, उसके बाद आप लोग लिखिएगा आराम से। A is 1 2 3 and then you'll have Br and here you will have CH3 group, ठीक है, C4H9Br. The first reaction they said what they said was with alcoholic KOH. This is CH3 only, na? So you have this is alpha, this is beta carbon. So there is only one beta carbon. You don't have to do anything. Alcoholic KOH will give you 1 2 3. There will be a double bond here. ठीक है? Make sense? Yes or no? Yes. Yes. ठीक है? उसके बाद आएगा आपके पास HBr. In HBr, what we need to do? You need to see this is the double bond and that is the दो double bond आपके पास. ठीक है? So this is going to have what? 0 hydrogen. This is going to have 2 hydrogen. अब यहाँ पे कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा अल्कोहलिक KOH का, that if it is going to have 0 hydrogen, then it is not going to get Br. If it is going to have 0 hydrogen, then it is going to get the Br. Why? Because Markovnikov rule. ठीक है, यहाँ पे आपको Br लगेगा, ठीक है। In the case of alcoholic KOH, we did not consider the carbon, which is, we did not consider the beta carbon having 0 hydrogen because we had to remove hydrogen. So while removing hydrogen, we need hydrogen on that carbon. That is why we did not consider the beta carbon which is having 0 hydrogen. In the case of addition reaction, you have to consider all the beta carbon. I mean, all the carbon-carbon double bond, not the beta carbon. Okay, this is the two reaction. And then it is saying that this reacts with sodium. This reacts with sodium. And it will give you 1 2 3. ये आपके पास CH3. फिर से आपने इसको ऐसे बना दिया 1 2 3. ये आपके पास CH3. These are my alpha carbons. इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने. Then you will count the number of carbon atoms 1 2 3 4 5 6.
So this is what? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you'll have methyl in the second carbon, methyl in the fifth carbon. So this is the D. This is D. This is your A. This is your B. और कुछ था क्या? This is your C. और तो कुछ नहीं है ना A B C D का. A B C D. हाँ ठीक है. D. D बना दिया हमने. हाँ D. Whatever you want to copy, you can copy it, guys. दिख रहा है आप लोगों को? By the way, if you can't see, then आप zoom कर सकते हैं. I think है ना? In the zoom में आप zoom कर सकते हैं at a particular point. फोन में तो होता है, पता नहीं लैपटॉप में होता है या नहीं. If you can't see, let me know. Sir, can you share the question? क्वेश्चन क्यों देखना है? क्वेश्चन Sir, लिखना है क्या? I thought it said D was C8. What did it say? D is C8, it's 18. हाँ. And we got C6. अरे यार फिर 2 मिथाइल भी तो Okay, है okay. इसको. Yes, sir, I got it. कोई बात नहीं होता है.
Rishita, waiting for you. ठीक है, ये था आपके पास एक मेन चीज था, एंड नाउ यू विल हैव टू राइट अ नोट. Yeah. As you have seen that we have done the Ward's reaction with same haloalkane and not different haloalkane. Okay. So why? Please write Ward's reaction is not done. Please write this with me. Okay. Ward's reaction is not done with two different alkyne halides. As it gives a mixture of product which is difficult to separate. ठीक है, which is difficult to separate. क्या होता है देखिए जरा. I hope you have written till here, which is difficult to separate. Let us suppose Yes, we have sir. CH3Br plus we have CH3 CH2Br. Okay, you're reacting this with sodium in the presence of dry ether. Now, in this case, we'll have millions, millions, and millions, and millions, and millions of molecules of methyl bromide and million molecules of ethyl bromide. Make sense? Is on operation. Rishita and Harsha. Yes. Yes, sir. What we expect is that methyl bromide reacts with ethyl bromide and it will give you propane. 3 कार्बन एटम ना, 2 कार्बन एटम इथाइल का, 1 कार्बन एटम मिथाइल का. करेक्ट है रिशिता और हर्षा? Yes, sir. ठीक. बट मिथाइल तो रुका नहीं रहेगा ना. मिथाइल will not wait for ethyl. Neither ethyl is going to wait for methyl. If methyl strikes upon another methyl, it will do the reaction and form CH3CH3. And it is possible. Probability is very high because we have millions of molecules of ethyl bromide and methyl bromide both. So some of the methyl bromide, many of the methyl bromide, they will strike with another methyl bromide without even colliding with ethyl bromide. So if they are going to collide with methyl bromide, they are going to make ethane, and there will be some ethyl bromide which are going to react with themselves and make 1-2 carbon atoms. It is going to make butane. Make sense? Yes or no? Please tell me. If there will be some Yes, reaction sir. between only methyl bromides, there will be some reaction with only ethyl bromides, and there will be some reaction between these two. And that is why we are going to get a mixture. And as you know, that mixture is not good. They are difficult to separate. Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. Okay. So next point, what we can say is that Ward's reaction always gives product with even number of carbons. Okay, not the carbon chain, the total number of carbons in the compound. Next is tertiary haloalkane does not show Ward's reaction. Does not show Ward's reaction. Right, as they undergo elimination and form alkene. I hope you have written that even number of carbon atoms. ध्यान से देखिएगा, ठीक है.
आपके पास सोडियम एटम था ना, ठीक, you had sodium. Sodium is going to give electron to halogen atom, which is present in Rx. Now, since halogen is getting electron from sodium atom, halogen will leave. Generally, halogen does not leave the electrons on the alkyl group. R पे नहीं छोड़ता है वो. But right now, it is, please don't write anything. Leave your pen aside and listen. But since halogen atom is going to get electron from sodium, why we are putting sodium? Sodium is a metal. It has a tendency to lose electron. It will lose electron to halogen atom, and when the halogen atom gets the electron, it will give the electron of this bond to the alkyl group. Make sense till here? Please tell me. Yes. So yeah. Yes, sir. Now this R, it is now what? R negative. So yeah. Make sense? Yes. Yes, sir. See? Now, obviously, we have millions and millions and millions of molecules of alkyl halide. So there will be some alkyl halide which will react with sodium and form R negative. There will be some alkyl halide which are unreacted. So that unreacted alkyl halide will be attacked by this R negative because this is what? Delta negative, this is delta positive, right? So R negative is going to attack on R here. It will give you a nucleophilic SN type of reaction. और यहाँ से X निकल जाएगा and you will have R dash R. So this is the general mechanism. जो जनरल मैकेनिज्म है, तो क्या होता है आपके पास, R has negative charge. This is most important, जहाँ पे बच्चों को confusion होती है. That's how R can get a negative charge because it is bonded with halogen atom. So halogen is getting a electron donor, that is sodium, which is more efficient than alkyl group. Now what happens in tertiary? Tertiary, you will have CH3, you will have carbon, you will have one more CH3, and you will have CH3 here, and you will have halogen here. It reacts with, let's suppose we have sodium atoms. So this X will be removed and this carbon atom will get a negative charge. So I can write CH3, carbon, CH3, CH3, and there is a negative charge here. Now, we have some unreacted haloalkane, which I can write like this. Carbon and halogen here. Okay. Now, what is supposed to happen? What is supposed to happen in Wolff's reaction? This carbon with negative charge should attack on this carbon atom. But I hope you can see that if I draw all the hydrogen, it is impossible to do that reaction. What's in Mary? I mean, we have not showing the hydrogen completely, no? But the hydrogen will be like this. So it is impossible for that carbanion, the carbon with negative charge, to attack on the alpha carbon. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So this won't happen. But carbon, it is having negative charge. It cannot bear a negative charge because it is not a very electronegative element. It has to lose this negative charge. So in order to lose that negative charge, it attacks on this hydrogen atom and it abstracts it. Okay, abstract नहीं करेगा. This carbon atom, it attacks on this hydrogen atom and it abstracts it. Like that means carbon is going to attack on hydrogen and hydrogen is going to lose its electron. The hydrogen loses its electron. Just give me a second. Let me color this something else. Now, after that, this hydrogen loses its electron. It gives the electron density here between the carbon-carbon bond, and then this halogen leaves, as we had in the elimination reaction. So you will get a product. What this? If you look at this particular product, then it is going to have all the CH3s are going to be as it is. The halogen is going to go away. So you have one carbon atom with three CH3s. जिसमें से एक का हाइड्रोजन निकल चुका है. CH2 and double bond and CH3. Okay, so something like this happens here. Can you please write this down?
Let me know once you're done writing. Both of you done? Yes. Okay. अब हमारे पास दो जो रिएक्शन बचे थे मेटल्स के, उसको कर लेते हैं. B, what we have done. कैसे लिखा था आप लोगों ने इसको, उस रिएक्शन को? Right, B, fitting reaction. ठीक है, fitting reaction में क्या होगा? You will have haloarine. We have not looking at the reactions of haloarine, but ये similar reaction, that is why I have put it here. Here you will have halogen. So this is haloarine in the presence of same thing, that is sodium and dry ether. It is going to give you dry ether. It is going to give you biphenyl or diphenyl. ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन जो है ना रटा रहना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू, देखिए कार्बन कार्बन जहां पे भी बॉन्ड बनता है ना, दोस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट नो मैटर वेयर द हैलोजन इज ना. यहाँ पे तो मैटर नहीं करेगा. कुछ थोड़ा सा आप लोग डिफिकल्ट केस ले सकते हैं. पहले आप इसको बना दीजिए. क्लोरीन है आपके पास, यू हैव सोडियम एंड यू हैव ड्राई ईथर. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड वन. सपोज यू हैव क्लोरीन हियर and here you have CS3. ठीक है, so in this case you have to make the molecules correctly. Sodium dry ether. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइफेनाइल बनाइएगा आप. इसमें बाइफेनाइल बना ही दीजिएगा, बाइफेनाइल, बिकॉज बाइफेनाइल विल बी देयर. ठीक है, बाइफेनाइल एंड सी दिस इज योर अल्फा कार्बन. उसके पैरा में CS3 था, तो उसके पैरा में CS3. ध्यान से, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड इसके पैरा में CS3, बिकॉज यू हैड ओनली वन मॉलिक्यूल ना. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes. आई बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. इसको कीजिए जरा. बीच वाले में तो बाइफेनाइल बनाना, वो आप लोग खुद से बना लीजिएगा. राइट अनदर क्वेश्चन. फोर्थ वाले क्रम को दीजिएगा आंसर.
Yes, correct. Very good. It's correct, Harsha. Rishita, Yes, sir. I just sent it. you have sent, but I have not received it yet. ठीक है, ठीक है. Correct, very good. ठीक है, बहुत बढ़िया. So this was your fatigue reaction. एक दूसरा होता है Ward's fatigue. So by the way, let me make the so, right. C A B C is Ward's fatigue. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? You will have a haloalkane and you will have the haloarine. You will have the halogen atom here. In the presence of sodium and dry ether, you will get alkyl benzene. ठीक है. बाय द वे, इसका नाम हमने नहीं लिखा था, इसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे. दिस इज बाइफेनाइल और यू कैन कॉल दिस डाइफेनाइल. ठीक है. This is alkyl benzene. Now let us suppose you have CH3 Br plus bromobenzene. Not necessarily it should be bromo. चलिए iodobenzene कर लीजिए. In the presence of sodium and dry ether, it is going to give. क्या बोलते हैं इसको? Toluene. ठीक है. These are also important things to remember. It is what? Toluene. Done. Yes, sir. अब अगला देखिए. So we have done metal reaction with metals also. Next is chemical properties of haloarine. ठीक है. थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको. मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट वीक आपकी ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा. राइट द हेडिंग. Chemical properties of haloarine. ठीक है. Chemical properties of haloarine. First of all, we have to compare the structure of haloalkane and the structure of haloarine. ठीक है. And after comparing, we will see that there are certain reactions that haloarine will not be able to show, or rather, there are certain reactions which haloarines show, and there are certain reactions which haloalkenes they are going to show. So, if you look at any haloalkane, it is going to be R. You'll have carbon atom. This carbon atom will have something else, and you will have halogen atom. ठीक है. अभी हम हाइड्रोजन ही रख देते हैं. Generally, हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है, but still, CH2 and X. Now, this carbon atom here, this is sp3 hybridized. ठीक है. This what? This is sp3 hybridized, है ना. और यहाँ पे आपके पास delta negative because it is pulling electrons, and this will be delta positive. ठीक. अब उसके बाद you have haloarine, which is going to have a halogen atom here. Fine.
this carbon atom, this is sp2, है ना? And we have also discussed that sp2 it is going to have higher electronegativity. अब higher electronegativity की वजह से this halogen atom will not have highly delta negative, ना ही this carbon atom will have highly delta positive. Also, another thing to consider here is that this halogen atom, it has lone pair electrons. One of the lone pair electrons will be in resonance, and that is why this bond is going to be what? It will be partial double bond. Partial double bond. Partial double bond. तो एक चीज हमने देखा. First thing is that the CX carbon, the CX carbon is sp2 hybridized. Second thing is that CX bond in halorine की बात हो रही है, ठीक है ना? Is partial double bond due to resonance. Due to resonance. अब इसी वजह से क्या होगा? It will show certain reaction which the haloalkenes does not show. ठीक है? And haloalkene we know that SN can happen nucleophilic substitution, but nucleophilic substitution is not going to happen in that case. And third thing we can write is the benzene ring in haloarene is electron rich. ठीक है? The alkyl group that we have in haloalkane, it is what? It is electron deficient. यहाँ पे benzene ring क्या? Electron rich है. Let me know if you're done with these 3 points. Very good, Rashida. I hope Rashida you're done. ठीक है चलिए. अब सवाल लिखिएगा. ठीक है, please write this question with me. Haloalkane shows SN, but haloarenes show SE. क्या मतलब है इसका? SN मतलब तो पता है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हैलोरीन्स में SE का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? In this particular question, the examiner will be looking at the explanation for this sentence, why haloalkene shows SN and why haloarenes they show SE. तो दोनों का अलग अलग explain करेंगे. ठीक है? So write in haloalkene, I'm writing RX, you are going to write haloalkene. In haloalkene, the carbon in CX bond has partial positive charge due to higher electronegativity of X. ठीक है? The halogen atom, X atom.
Therefore, electron-rich nucleophile. Electron-rich nucleophile attacks on that carbon and shows SN. In halogenes, what happens? Since haloarene has electron-rich benzene ring, therefore electron poor, electrophile. Electrophile will be electron loving, that means electron poor. Attacks electrophile लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है ना? E पॉजिटिव ने लिखिए, electrophile लिखिएगा. Attacks and shows electrophilic substitution. Okay, so once we understood that it is going to show electrophilic substitution, we are going to look at the reactions in the next class.